जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We begin the proceedings of this webinar with the recitation of Holy Quran. I would recite few verses. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. A very brief introduction of Professor Abid Jamil. He is a medical oncologist, a medical educationist, and remained as the ex-dean of the PGMI. This particular lecture or the webinar was organized keeping in view the problems in the diagnosis and the management of mycosis fungoides cases. So it will be next 40 minutes, we will be discussing the management and review of the cutaneous T-cell lymphoma, particularly mycosis fungoides. With us as the panelist and expert is Major General Retired Professor Zafar Iqbal Sheikh, who has, beside his teaching career, has an interest in the cutaneous T-cell lymphomas. The ground rules are that I would like all the participants that they can share their views or their questions in the chat box, and we would address them at the end of the presentation. So over to Professor Abid Jamil for his presentation. Thank you very much, Professor Mahmood Noor, for inviting me. It's always a pleasure being in LRH. It's here where I started my career. Started my house job over here. When I came as an oncologist, I started oncology in LRH. So as a kid, my father was a dermatologist in LRH. So we used to come when I was in the school. I used to come to LRH. So this LRH has changed totally for me because from my childhood till my career as an oncologist, two panels, right? You see this blue one and you see this one. So these are stem cells, right? In the bone marrow, stem cells, they differentiate either into B cell or into T cell. So when they go into the B cell lineage, they'll express CD20, CD10, CD19, CD22. If they differentiate into T cell, they go into the thymus. Thymus may they go and then they will have CD34 subyoga initially, and then they'll have CD7, CD3, CD4, CD8. So if it's CD2, 3, 4, so you're talking about T cell. If you've got CD19, 20, 22, 20, 52, 72, you're talking about B cell. So why do we need to differentiate different stages? The early the stage, the more aggressive the lymphomas. Leukemias hoti hain, blast cells hote hain, they're very, very aggressive. But there are certain lymphomas that are aggressive and they will express the early markers. The ones that are indolent, ab jaise T cell mein aap dekh lein, indolent one will express CD2, CD3, CD4, right? But here CD34, CD7, CD8. So these CD gives us, helps us in two ways. First, they tell us whether the lymphoma is B cell or T cell. T cell are more aggressive and the treatment is more aggressive as well. Number two, they'll tell us whether they are in the early stage of differentiation, more aggressive, or they are indolent and the late stage of differentiation. CD ki samajh aa gayi hai? Sir, ek dafa phir. Yes. Right? So CD markers, cluster of differentiation, the transmembrane proteins, the antigen is outside of the cell surface, the rest is inside, antibodies attached to it, and they can kill or they can transmit signals through the transmembrane proteins. These CD markers keep on changing as the cell differentiates. So at early stage of maturation, there'll be different set of markers. At late state of differentiation, there'll be different set of markers. And then there'll be CD2, 3, 4, that will be T-cell lymphomas, and CD19, CD20, CD22, CD52, CD79,
these will be B cell markers. So they tell us about the lineage, whether they are T cell or B cell, and they tell us about differentiation, stages of differentiation. ठीक? एक और भी slide. It's not that difficult, but so CD2, 3, 4 TCR, we're talking about T cell. CD52, 19, 22, 20, we're talking about B cell. So let's say we have a biopsy report. Initially, what a pathologist will do is, after looking at cell morphology, ठीक है, सबसे important है morphology. अच्छा, एक महमूद साहब ने दूसरी बात की कि कभी-कभी आ जाता है कि CD flana positive in reactive T cells or CD flana positive in reactive B cells. So what does that mean? Can anyone help me? CD, let's say CD 20 positive in reactive B cells. Would that be malignant? It could be normal because inflammation में भी तो cells आते हैं, right? So सबसे पहले morphology देखेगा, the pathologist will look at the morphology and then he'll stain. So if the cells are inflammatory, they are not malignant, so and they express CD markers, the pathologist will write that these are reactive cells, ठीक है, जो infection में भी होता है, different scenarios में mononucleosis, whatever. So that can happen. But if the cells look malignant, then the pathologist would say CD flana positive in abnormal T cells or B cells. तो reactive और malignant का पता चल गया. Reactive होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो malignant हो. और अगर abnormal cells होंगे तो then you are in disease, right? So biopsy comes and the pathologist would first stain for CD3 and 20 क्योंकि सब staining करना बहुत expensive होता है, बहुत ही expensive stains होते हैं. So CD3 and CD20. अगर CD20 पॉजिटिव है तो फिर बाकी B सेल के मार्कर्स फिर डिफरेंशिएट करेगा अर्ली स्टेज बिटवीन एग्रेसिव एंड अदर्स. अगर CD3 है फिर वो CD3 के मार्कर्स लगाएंगे, राइट? एंड देन CD3 मार्कर्स विल टेल यू कि ये लिम्फोइड पैपुलोसिस है या L पॉजिटिव लार्ज सेल लिम्फोमा है या माइकोसिस फंगोइडिस है, राइट? सो क्लियर अबाउट CD markers and everything? Now we come to the difficult part. If you thought that was difficult. Now we come to the TCR gene receptors. अब आपने मेडिकल कॉलेज की अपनी बायोलॉजी याद करनी है. तो if you remember, T cells are formed in bone marrow. ठीक? From bone marrow, they come to the thymus. T cells thymus आएंगे. Thymus में क्या होता है? T cells undergo VDJ. VDJ आपके लिए maybe it's a bit more difficult to understand VDJ, but जिन्होंने जो मेरी तरह थे जिनको बायोलॉजी बहुत पसंद थी, VDJ cell structure होता है जिसमें there are differentiation, right? So when immature uncommitted progenitor cells come to the thymus, there is rearrangement of TCR gene, right? बस इतना आप रखें, याद रखें कि TCR एक जीन होता है and every cell will have its own unique TCR rearrangement. Once they have a TCR rearrangement, these will be mature cells now. TCR rearrangement के बाद mature cells आ जाएंगे. So if they have and do you know how many T cells there are commonly in the body at the moment, at one moment? नहीं, कितने numbers में कितने होते हैं? About 2 billion T cells in the body, right? So they'll have their own unique TCR gene rearrangement. जब वो thymus में जाएंगे तो वहाँ पे TCR gene rearrangement होगी and then they'll mature. After TCR gene arrangement, they'll mature, but they'll have a unique TCR gene rearrangement. अब clonality और monoclonality आ जाती है. So if you take a biopsy and there are different types of T cells, ठीक है, तो वो polyclonal होगा. So that is a normal. But if it's a neoplastic, तो एक stem cell से वो neoplastic, क्योंकि क्या होता है, एक ही cell से proliferation होती है. So you will see when you do a PCR, you will see one particular TCR gene arrangement. Mycosis fungoides में उसे कहते हैं TCR beta. इसमें alpha, beta, gamma, delta होती है. So in mycosis fungoides, you will see TCR beta. So in a normal tissue, there will be polyclonality. ठीक है, alpha, beta, different cells होंगे. But if you see polyclonal, यानी कि वो एक cell से निकले हैं,
you will see that the PCR will show one particular enhancement of one particular gene. So that's called PCR gene rearrangement monoclonality. So polyclonality, normal. Monoclonality, not good, pathology. So these naive T cells, when they get their own PCR gene rearrangement, they come to the draining lymph node. Once they encounter an antigen, they express cytokine receptor 4, and other cytokine receptors that help them enter the skin. Normally, they cannot enter the skin, but after they encounter an antigen, they start expressing CCR4, and they enter the skin, they kill the antigen, and then they go back to the lymph node, and then they reside there as T memory cells. थोड़ी सी समझ आई है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रहा NPM पे चल रहा है ना? बाज़ लोगों को नींद आ रही है, बाज़ लोग enjoy कर रहे हैं. So now we are clear about TCR, and we are clear about CD2, 3, 4, CD. Right. So the second question is, how do you differentiate between primary cutaneous T cell lymphoma and a lymphoma, a peripheral T cell lymphoma? ठीक है, generalize एक होते हैं जिसको हम कहते हैं peripheral T cell lymphomas, and the second one is cutaneous, primary cutaneous. And people say कि जो peripheral T cells होते हैं वो भी तो cutaneous involvement करते हैं, तो हम कैसे differentiate करेंगे between the two? Can anyone help me? कैसे differentiate करेंगे? Genetic analysis. L positive or L negativity. L positivity, L negativity होता है, हाँ. लेकिन L positive, L negative दोनों skin में और peripheral दोनों में होते हैं, और दो skin में कम होते हैं. Nodal जो L here होगा, it would be L positive. Skin का जो होता है वो by definition it would be negative. But in some cases there might be a nodal जो ALCL है वो भी L negative हो सकता है, and then nodal भी हो सकता है. सारे nodal L पर तो again फिर वही पर बात है कि that can be L negative as well. यहाँ से कोई कुछ कहना चाह रहा था जी? नहीं, वो बात की बात है. बिल्कुल बेसिक चीजें मुझे बताएं. क्लिनिकल किसने कहा? क्लिनिकल पे क्या करेंगे सर? क्लिनिकल पे ये देखना है कि पेशेंट को सिस्टेमिक या कॉन्स्टिट्यूशनल साइन क्या है, इसके अलावा एग्जामिनेशन के टाइम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किन लीजन एग्रेसिव सेकेंडरी केसेस आ गए दैट वुड बी पेरिफेरल. सर नोट्स नहीं ठीक है, लेकिन कोहार्ट की वजह आप पब्लिक की तरफ जा रही है ट्रेन पे लेकिन ट्रेन आपकी पटरी में जा रही है. इन्होंने जैसे कहा इट्स इजी, आपको और कंफ्यूज नहीं करता हूं. स्किन ओनली होगा, ठीक है. इट इज प्राइमरी कुटेनियस, सो इन्वॉल्व्स स्किन ओनली. वो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल प्रोफाइल वो ठीक है, वो उसमें डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मैं क्लिनिकल बता रहा हूं. जबकि जैसे आपने कहा L पॉजिटिव होगा, CD30 पॉजिटिव होगा, PTCL CD30 नेगेटिव स्किन वालों में भी होते हैं. CD30 पॉजिटिव भी होते हैं, CD30 नेगेटिव भी होते हैं. डिफरेंस उसमें L पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. सिस्टेमिक जो होगा इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व द लिम्फ नोड्स और द स्प्लीन और द लिवर. सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होगी. तो अगर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है और साथ स्किन इन्वॉल्वमेंट है, so that is primary cutaneous T cell, sorry, that is primary peripheral T cell lymphoma. ठीक है, उसमें skin भी involved होती है, organ है skin. So if it involves different organs, it will also involve the skin. अगर primary cutaneous है तो उसमें और organs, lymph nodes वगैरह ये नहीं involve होंगे. Later stages में हो सकता है, early stages में organs नहीं involve होंगे, सिर्फ skin involved होगा. But as they progress, later on, जो मैं कहना public cohort, because these can later on then involve the organs.
लेकिन फिर भी वो पेरिफेरल नहीं होंगे, वो कुटेनियस होंगे, एडवांस। सो वी आर क्लियर अबाउट प्राइमरी, कुटेनियस एंड पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमास, ठीक है। खफा हो गया आज हमारी टेक्नोलॉजी जो है। सो primary cutaneous lymphomas में there are, you see the huge. So we'll only talk about mycosis fungoides. We'll talk about Sézary and जो दो तीन important है, adult T cell leukemia lymphoma, primary cutaneous CD30 positive lymphoma, and a very aggressive extranodal natural killer T cell lymphoma. ये जब हमारे पास भी आता है, चाहे cutaneous आए, चाहे वो peripheral आए, हमारे भी औसान खता हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और दे आर किलर्स। जैसे नाम कहता है नेचुरल किलर, दे आर किलर्स। सो विल जस्ट आई शो यू अ कपल ऑफ पिक्चर्स जस्ट टू गिव यू नॉलेज अबाउट दिस। सो mycosis fungoides and Sézary syndrome makes about 55-60%. The rest of these three make 30%. So just by covering this, I think we'll cover most of the T cell lymphomas. बाकी में मैं नहीं जाता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। So the question number 3 was a $1 million question: how do you diagnose mycosis fungoides? Again, Professor Noor said it's very difficult. My trainees get confused. When I tell them, don't worry, I get confused as well. We are in the same boat. So what we'll do is today we'll try to see if we can make our boat reach the shore, right? So together we'll try to make our boat reach the shore. So थोड़ी सी confusion अगर आए, raise your hand and just ask, right? Because this is important that you understand. So coming to mycosis fungoides, as I said earlier on, this is the most common. About 55% of all primary cutaneous T cell lymphomas are mycosis fungoides. Do you see a lot? Dermatology में do you see? ये कैसे हो सकता है? मेरे तो अभी आए हैं, पिछले हफ्ते 2 पेशेंट्स आए हैं. Not very often, but आ जाते हैं ना? Right. So incidence, because incidence is very low, 5.6 per million population. So they are very rare. Age usually 50s से start होते हैं, and then as we age, the chances increase and peaks at about 70. So usually you'll see 50s, 60s, 70s में patient you'll see. And men unfortunately are affected more. हर जगह हम ज़्यादा ही affect होते हैं. Or diagnosis is very difficult. Diagnosis, it's actually not a single test that you can say. जिस तरह हम बाकी lymphomas में luckily हम कहते हैं कि ये फलाना है, mycosis में ऐसे नहीं है. So there is an algorithm for that, which we'll discuss. Differential diagnosis में dermatologist तो मैं नहीं हूँ, but drug eruptions, contact dermatitis, atopic eczema, psoriasis, fungal infection, and lichen planus. Okay, so it can mimic these. So algorithm was made by International Society for Cutaneous Lymphomas to make it easy to diagnose mycosis fungoides. So the first criteria is clinical. Clinical में क्या है? Persistent or progressive patches and plaques. ठीक है? Progressive and persistent. And these are indolent, so they'll be there for years and years and years. So patient will come to you and say कि जी मुझे तो ये skin का मसला है और ये तो पिछले इतने सालों से है और ये बढ़ रहा है. So that would be the first clinical. Then the second one is it will be in non-sun exposed locations, right? So जिसे हम कहते हैं bathing suit areas. तो अगर इसको progressive patches हैं, so that will be 2 points. अगर उसको नॉन एक्सपोज सन लोकेशन है 1 point, शेप एंड साइज वेरिएशन हो रही है पॉइक्यूलोडर्मा 1 point. देन हिस्टोपैथोलॉजिकल, सुपरफिशियल लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट 2 points. अगर इसमें एपिडर्मोट्रोपिज्म है, एपिडर्मिस में एटिपिकल सेल्स हैं तो और एटिपिया है तो अगेन 1 point. देन वी कम टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. उसमें क्या होगा? क्लोनल टी सेल रीअरेंजमेंट, TCR बीटा, PCR आप कराएंगे एंड TCR बीटा क्लोनल. रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन क्लोनल एंड पॉलीक्लोनल? क्लोनल डिफरेंशिएशन होगा. एंड
Then we come to immunohistochemistry. So these are CD2, CD3 positive, and remember CD7, CD8 negative. CD2, CD3 positive, CD7, CD8 negative. इसका एक point है. Most important, सबसे ज़्यादा weightage देते हैं clinical और histopathological को. So if you get 4 points over here and you don't get any points over here, doesn't matter. अगर आपने 4 point इसमें बना लिए clinical और histopathological में, तो बाकी अगर ना भी हो, doesn't matter. So this is the algorithm. If you make, say, if you get 4 points, diagnosis of mycosis fungoides, there is myelofibrosis, hematology, myelofibrosis, we write MF, and by MF usually mean by myelofibrosis. So I'm sorry if I say myelofibrosis, take it for mycosis fungoides. So we have got clinical, histopathological, molecular, immunohistochemical. 4 points, and you make the diagnosis of mycosis fungoides. Okay? So algorithm is available, you can get it from the net. So Sézary cell में क्या होता है? It is basically leukemic form of myelofibrosis. So there can be primary Sézary syndrome, and there can be Sézary syndrome that involves from myelofibrosis. Myelofibrosis later stages may it can convert into Sézary syndrome. उसको कहते हैं myelofibrosis preceding Sézary syndrome. ठीक? So, जी? mycosis fungoides preceding Sézary syndrome. So there will be large lymphocytes in the blood. Lobulated cell. If you see here, you see a normal lymphocyte here, right? This is a normal lymphocyte, and here you see cerebriform corrugated lymphocytes. So these are diagnostic, and Sézary cell count should be more than 1000. This is B2 कहते हैं. And involvement of, अच्छा इसमें lymph node involvement होगा and complete effacement of lymph node architecture होगा Sézary में. Perivascular infiltrates, don't worry about that. And CD4 CD8 ratio इसमें more than 10 होगी. ठीक है? तो CD4 ज़्यादा होते हैं, CD8 का. So the ratio of CD4 CD8 will be 10. So important things are generalized erythroderma होगा. Number 2. Sézary cells होंगे with cerebriform nuclei more than 1000 in the blood, and complete effacement of lymph node architecture, and CD4 CD8 ratio would be more than 10. So coming to staging, T1 patches or papules less than 10% of the body area. T2 patches and papules of plaques covering more than 10% of the body of the skin surface, body surface area. T3 जब tumor stage में चला जाता है, and T4 generalized erythroderma. N0 no clinically involved lymph node. N1 is node is there, but it is not node is enlarged but not histopathologically involved. N2 node is histopathologically involved but very few cells. N3 complete effacement of the lymph node. M0 no visceral involvement, M1 visceral involvement, B0 less than 5%, B2 more than 5%, and sorry B1, and B2 is Sézary syndrome. ठीक है? Now can anyone tell me, ताकि कोई सोए ना, तो मैं बीच में सवाल फेंकूंगा. वो ये है कि how would you measure? हम कहते हैं ना 10% of the body surface area. How would you know 10% of the body surface area? जी? So palm of your hand, including your fingers, that makes 1%. ठीक है? तो 10 अगर आ गया तो 10% है, 10 से कम है तो less than 10% है, 10 से ज़्यादा है तो अब डिपेंड करता है क्योंकि मेरा हाथ और आपका हाथ तो डिफरेंट होगा, but roughly, right? Staging again, stage 1A, stage patch and plaque less than 10%, 1B more than 10%, 1A palpable lymph node होगा, 2B फिर गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे ट्यूमर्स आ जाते हैं और फिर ट्यूमर generalized erythroderma and Sézary syndrome, these are problematic.
So 1A to 2A, this is early stage mycosis fungoides, and 2B onwards is late stage. Why are these important? क्यों staging important है? Treatment wise and prognosis wise. ठीक है, आपको prognosis का पता चल जाता है कि इस patient की prognosis क्या है. So this is patch stage. ठीक है, just few patches. This is plaque stage. अब ये tumor में आ गया. So this is now big problem. These are the two patients that I came last week. ये एक lady है, and this is a gentleman who came 3 days ago, and they've got generalized. So whenever we come across patients, they've got advanced stage disease. Early stage में बड़े कम देखे हैं. Early stage में diagnosis का भी problem होता है. So this is generalized heteroderma. Staging क्यों important है? देखें stage 1 की अगर आप देखें 20 years survival, more than 80%. So if the patient has stage 1A disease, chances are he is going to have a normal life expectancy just like any other person who is unaffected. ठीक है? Stage 1B थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन still अगर आप देखें तो 25 years पे 70% of the patients are still alive at 25 years. Stage 2A, again, more than 60% of the patients are alive, and but when you come here, stage 3, stage 4, you see here stage 2B. Tumor stage से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है? क्योंकि 2A देखें 60% 25 साल पे alive हैं, लेकिन अगर आप 2B देखें तो almost 20% at 20 years. Right, so that's why staging is very important. And tumor stage, it shows that how aggressive tumor stage disease is, right? And then stage 4, horrible. Sézary syndrome patients do not live more than 1 year or maybe 1.5 years. And then there is, हम oncology में इन चीजों को बहुत ज़्यादा weightage इसलिए देते हैं because they are important. अगर किसी को ये ना आता हो, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एग्जाम में पास हो जाए FCPS के एग्जाम में, because if you do not know staging and if you do not know the international prognostic index, खुदा करे आपको दुनिया जहान की oncology आती हो, आपको सब चीजें, you just cannot imagine getting passing marks if you do not know these prognostic indications. So early stage में क्या है? It's very easy. Male gender, जहाँ male आ गया bad prognosis, हमेशा उसमें गड़बड़ी होगी. Age more than 60, bad prognosis. उधर भी हम जाने वाले हैं बहुत करीब, अनकरीब, तो हमारे तो 2 bad prognostic आने वाले हैं. Plaques, folliculotropic disease, N1. ठीक है, या node नहीं involved या involved है लेकिन histopathologically नहीं है. Below 60, then we need to do everything. We need to do everything. We need to go hiking, we need to do off-roading, because दो यहाँ भी देखो ना, late stage में भी हमारे दोनों bad prognostic आने वाले हैं. 1 साल रह गया. So whatever you have to do, we have to do it by the end of next year. Otherwise, we'll be in bad prognostic group. Stage 1, stage B1, B2, and histopathological involved lymph node. अब ये इसका क्या होता है? इसमें हम risk categories बना लेते हैं. Risk category, low risk, only 1 factor. Intermediate risk, 2 factors. और अगर 3 to 5 है, high risk. Overall survival पे क्या फर्क पड़ता है? अगर 0 या 1 है तो 90% survival है 10 years. अगर 2 involvement है तो 76% है, अगर 3 है तो 50% है. और low risk again in high risk 53% 10 years survival, कितना 90 से 53 पे आ गया है high risk का. Intermediate 20% and high 15%. So these prognostic indicators are very important because it tells you about the prognosis and how aggressive you have to treat this patient. Clear? यहाँ तक कोई सवाल? या मैं थोड़ा सा सवाल सर मैं हमारे पास यूपीएससी जाते हैं देखते हैं they are मतलब cutaneous only, मतलब skin की involvement होती है, lymph nodes नहीं होते सर. So how frequently we need to do their like हम when over उनकी CT और when आया CT chest and abdomen we should do right there, and if it is normal should be repeated periodically. Excellent question. अगर non-mycosis fungoides हैं, बाकी peripheral, बाकी cutaneous T-cell lymphomas हैं, ALK positive या CD30 positive,
उनमें CT स्कैन कराना होता है because they are aggressive and they may have lymph node involvement. Because mycosis fungoides is indolent and early stages do not have lymph node involvement. तो अगर आप clinical examination भी कर लेते हैं और clinically palpable नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है. But if you think there are clinically palpable nodes 1 centimeter और इस तरह हैं, it should be more than 1.5 centimeters to biopsy. तो अगर baseline पे आप करा लेते हैं करा लें, लेकिन अगर उसके बाद आपको clinically lymphadenopathy वगैरह नहीं feel हो रही, so you don't need to do it repeatedly. लेकिन it is for mycosis fungoides. For others, other cutaneous T-cell lymphomas, aggressive ones, for that you need to do a CT scan initially and at certain intervals. ठीक? तो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट थोड़ा सा तो इसने पागल किया है, अब बाकी जो कसर रह गई है वो मैनेजमेंट में जो है वो पूरी हो जाएगी. सो what सबसे पहले what is the goal to therapy? So naturally your top priority is to cure the patient. अगर क्योर नहीं हो सकता तो कम से कम ड्यूरेबल रिस्पॉन्स हो, जितनी ज्यादा उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्स हो उतनी हो. अगर कंप्लीट रिस्पॉन्स भी नहीं हो सकती तो कम से कम उसको जो है पार्शियल रिमिशन हो. पार्शियल रिमिशन भी नहीं है तो फिर हम स्टेबलाइजेशन पे खुश हो जाते हैं. हम ऑन्कोलॉजी की छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं. पेशेंट को 2 महीने की रिलीफ मिल जाती है, हम कहते हैं वाह वाह लोग हमारा 2 मैच तक 2 मैच से क्या होता है. मैंने कहा हमारे लिए 2 मैच ऐसे तो हमारे लिए 20 साल हो. सो स्टेबलाइज, अगर कभी कभी ये भी होता है कि पेशेंट को एडवांस डिजीज होती है, वो स्टेबलाइज हो जाकर हाँ डॉक्टर से मरज खत्म हो गया. नहीं खत्म नहीं हुआ, बड़ा भी नहीं है कम भी नहीं हुआ. बट फॉर अस स्टेबलाइजेशन इज ओके. तो हम कहते हैं जालिमा शुक्र करो मर नहीं रहे हो. तो अगर वो भी नहीं है तो बाकी जो है ना फिर ये कि अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड इम्यूनोसप्रेशन, फिर जितनी मिनिमम टॉक्सिसिटी उसको दें कर दें. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकग्नाइज एंड ट्रीट इन्फेक्शंस, क्योंकि स्किन इन्वॉल्व होती है तो नेचुरली जो बैरियर इन्वॉल्व होते हैं तो इनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं. सो दीज आर आवर मेन जो है पॉइंट्स दैट वी शुड बी कीपिंग इन आवर माइंड बिफोर वी स्टार्ट. क्योर है या रिमिशन हम अचीव करना चाहते हैं ना स्टेबलाइजेशन. अब अगर एडवांस स्टेज में है स्टेबलाइजेशन भी हो तो आई थिंक शुड बी ओके. घबराना नहीं, but these are all the treatment options available. So I'll only discuss the ones that are relevant. अच्छा, एक आपने जरा ख्याल करना होता है, there are certain drugs that may cause symptoms just like mycosis fungoides, and most notorious of that is hydrochlorothiazide. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती हैं उसमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, लिसिनोप्रिल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, serotonin reuptake inhibitors hain. So what was observed was that when you stop the drugs, the symptom starts to disappear. But once mycosis fungoides is established, then it won't disappear even if you stop the drug. तो ड्रग की हिस्ट्री, अगर किसी को ऐसे कुछ स्किन रैश है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट दैट दे आर गेटिंग जरा लेने उससे. ठीक है, so you can change those medications and see if they respond. If not, then we go to the next slide. So do we immediately, हाँ अब हम जब ऑन्कोलॉजी में हम वाइवल लेते हैं तो हम कहते हैं कि क्या करोगे, बस ट्रीटमेंट पे शुरू हो जाते हैं हम ये. But do you really need to treat all the patients all the time? The same question is for stage 1A mycosis fungoides. कि अगर एक पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट वी कॉल, जैसे हम क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में करते हैं, वेट एंड वॉच. इफ अ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग, कोई प्रोराइटिस नहीं है, कोई मसला नहीं है, इतनी ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं हो रही, जस्ट वेट एंड वॉच. बट फॉर दैट योर पेशेंट शुड बी इंटेलिजेंट. यू टेल देम कि अगर आपको ये मसला हो, बड़े साइज हो, बड़े इसका ज्यादा हो, इचिंग ज्यादा हो, आपके फौरन आना है, या आपने हर 2 महीने या हर 3 महीने बाद आना है. तो अगर वो इंटेलिजेंट इनफ है, यू कैन पुट दैट पेशेंट ऑन वेट एंड वॉच. डोंट नीड टू ट्रीट दैट पेशेंट स्टेज 1A में ओनली. ठीक है, सो नंबर 1 इज वेट एंड वॉच. ऐसे ना आप एडवांस स्टेज में कह देंगे जी हम वेट एंड वॉच करेंगे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी. फिर
So only for stage 1A. Then topical steroids are favorite. So they have got a very high response rate. Initial जब होता है stage 1A, 1B में बहुत ज़बरदस्त response होता है 94%. So you can just start them on topical steroids, ठीक है? And toxicity भी minimum. बाकी की toxicity बहुत ज़्यादा होती है. इनकी toxicity comparatively बहुत कम होती है. And response rate early stages में बहुत ज़्यादा होता है. So you can start with topical steroids. Then phototherapy for initial stages, that is patch and plaque. उसमें एक है narrow band UVB and the second one is PUVA. So this is for T1B. ठीक है? तो T1B, T2B patch और plaque में अगर है तो आप उसको UVB या PUVA. Do you do these things? UVB, PUVA? Narrow band UVB? PUVA नहीं करते? कहीं पाकिस्तान में पूवा हुआ है, लाहौर वगैरह में होता है, राइट? सो पेशावर में नहीं, ठीक, अच्छा, हाँ, ठीक है. सो नैरो बैंड यूवीबी और पूवा, ठीक है. दिस इज अनदर ऑप्शन. And low dose total skin electron beam therapy, 30 to 36 grays total skin electron beam radiotherapy. So what is the difference between the normal radiation that we give and electron beam? ये तो मैंने लिखा total skin. आप अगर normal radiation total skin को दे दें तो patient का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो जाएगा सीधा ऊपर. तो ये हम कैसे देते हैं टोटल स्किन को? इसकी पेनिट्रेशन कम होती है, राइट? सो इट विल नॉट रीच द डीप टिश्यूज, क्योंकि माइकोसिस फंगोइडिस इज यूजुअली एपिडर्मल, ठीक है? तो इसकी पेनिट्रेशन जितनी तो बोन मैरो वगैरह इससे बच जाएगी. बाकी टिश्यूज जो हैं और डीप टिश्यूज और बोन मैरो इससे बच जाएगी, right? So there, the electron beams penetration is low. They will only penetrate the superficial skin. जी, हम तो भेजते थे नूरी में है, CMH में और नूरी. यहाँ पे अब इन्होंने नई मशीन लगाई, I don't know, but majority of my patients I refer them to नूरी में वो कर रहे हैं. So we have got a few patients who have electron beam at नूरी. Peshawar में दोनों को भी start किया कि नहीं, but we refer them to Islamabad. ठीक, Bexarotene using or not? नहीं? अच्छा, this is basically a retinoid receptor activator. What happens is there is a retinoid acid receptor and a retinoid X receptor. Heterodimers होते हैं, when they combine, they start sending signals. कुछ होते हैं कि proliferate, कुछ होते हैं कि apoptosis, cell death होती है. So it controls those signals. And though it is available as a topical ointment, and it is also available orally. Majority of the cases orally used होता है. 300 milligram daily dose है. Second line therapy है. अगर पहली वाली fail हो जाए, UVB, PUVA और topical steroids fail हो जाए, उसके बाद second line में आप Bexarotene देते हैं. लेकिन आप अगर इसको दें तो बंद नहीं करना जल्दी. It takes a few months to start its effect. तो अगर 3-4 महीने में उसको slowly बेहतर हो रहा है, you continue, right? It may take up to 6 months for a patient to start seeing benefits. So you have to keep on giving that for at least 3 to 4 months to see if there is a response. Response rate is takriban 44 to 63%. The good thing is it can be combined with PUVA or interferons. So you can give combination and it will further improve the overall response rate. Combination में आप इसको दे सकते हैं. Toxicities बड़ा ख्याल करना, hypertriglyceridemia तो lipid lowering agents पे patients को डालते हैं. Hypothyroidism तो thyroxine पे patients को डालते हैं. Teratogenic है, pregnant ladies में आप retinoid acid receptors नहीं दे सकते, ठीक? Or it can also cause deep vein thrombosis as well. So you have to be careful about deep vein thrombosis.
जी मैंने एक पेशेंट में कोई बहुत पहले almost 8-9 years ago, because it was horribly expensive at that time, उसने बाहर से मंगवाई थी, उसके रिलेटिव थे कनाडा में, तो उसने कनाडा से मंगवाई थी. So I've used it in one patient. Histone deacetylase inhibitors, they are available in our country as well. Although we haven't used it, they are quite toxic. But in advanced stage mycosis fungoides, you have an option. FDA approved vorinostat, belinostat, and romidepsin. Vorinostat is oral, romidepsin is injectable. Okay? So overall response rate again, takriban 35-40% in sabka. Advanced stages, second line, third line chemotherapy jab hum use karte hain, 38%. Toxicities are anemia, thrombocytopenia, GI toxicities, and prolongation of QTc interval. So inki ECG aapne regular at baseline and regularly karani hoti hai. Extracorporeal phototherapy, you take the blood out, you give methoxysorelin, you take the blood out, like in plasmapheresis mein jaise hum karte hain, or you expose that to UVB radiation and you give the blood back. 5% takriban usme jo cells hote hain, unme because of the UV radiation that you expose the blood to, cross-linking ho jati hai. When there is a cross-linking, the cells die. So you can do that for 2 consecutive days every 4 weeks. Okay? So this is usually treatment of choice for Sézary syndrome. Because Sézary syndrome is a lot of blood involved for that. So what you do is you give methoxysorelin, you take the blood out through plasmapheresis machine, you expose them to UVB radiation, you give the blood back, and the cells will have cross-linking and they'll die. So that is extracorporeal phototherapy. Monoclonal antibodies, you see here, these are the antigens. They come and attach, and they will kill the cells on which the antigen is present. So where CD20 hai, monoclonal antibody, वो सिर्फ उन cells को मारेगी जिसके ऊपर CD20 है. अगर CD4 है, it will only antibody है, तो it will only kill the cells that have CD4. So they are specific. बाकी जो cells होंगे वो spare हो जाए. तो cytotoxic chemotherapy में क्या होता है? When we give cytotoxic chemotherapy, everything is washed out. So it's like daisy cutter bomb. आपने bomb फेंक दिया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, terrorist, non-terrorist, सब मर गए. This is targeted therapy. You send a Tomahawk cruise missile and it goes and it hits the target, right? So the rest जो है वो बच जाती है. And the other drug that you will come across is brentuximab vedotin. It is anti-CD30 antibody. इसमें क्या है कि antibody है, इसके साथ एक cytotoxic anti-tubule agent attached हुआ है. So this antibody will go and it will attach itself to the cells that have CD30 expression. जो monoclonal cells होंगे, जो CD30 positive होंगे, वहाँ attach होगी, internalize होगी. जब internalize होगी तो इस cytotoxic drug को cell के अंदर छोड़ देगी. So it will kill the cell internally. So वो chemotherapy जो हम देते हैं, जो पूरे body में फैलती है, वही chemotherapy हम जब attach करते हैं monoclonal antibody के साथ, तो वो जाके सिर्फ वही CD30 cells मारेगी, बाकी cells नहीं मारेगी. So this is the advancement in technology, and this we use in these antibodies we use in peripheral lymphomas quite a lot. We use it. Alemtuzumab is an antibody that will specifically hit CD52, right? Brentuximab, as we discussed, CD30. Mogamulizumab, इससे मुझे मोगैम्बो याद आ जाता है. तो मोगैम्बो तो खुश हो जाता था, हम इतने खुश नहीं होते. This is basically chemokine receptor 4 specific monoclonal antibodies. Chemokine receptor 4, CCR4, mycosis fungoides में, फिर मैं कहने वाला था myelofibrosis. Mycosis fungoides में CCR4 जो है वो positive होता है. So mogamulizumab, chemokine receptor 4 specific है, and it will go and it will kill the cells by antibody dependent cell cytotoxicity, specific T cells that express CCR4. And it is approved for relapse or refractory cases. ठीक है, first time में नहीं है, जिनको refractory cases होते हैं या advanced cases होते हैं. Denileukin diftitox is one drug, but it's not available now. It is also an antibody that is IL-2 interleukin 2 के खिलाफ antibody है.
उसके साथ डिप्थीरिया टॉक्सिन अटैच है, लेकिन आजकल मार्केटिंग इसकी नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा के गोल कर दिया। तो सिस्टेमिक कीमोथेरेपी क्या क्या है? प्राइलेट्रेक्सेट एंड आर मोस्ट फेमस, इस पे हमारी सारी आबादी चल रही है, मेथोट्रेक्सेट। सो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट all the patients who are on methotrexate, क्योंकि बेक्सोरोटिन कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, एक आदि कहीं कर लेता है, बाकी यूज जो हैं। So methotrexate in low dose we give between 5 and 25 milligram per week. इसके साथ कौन कौन से टेस्ट कराएं, क्योंकि आप यूज करते होंगे, methotrexate के साथ कौन कौन से टेस्ट मैंडेटरी होते हैं जो आपने रेगुलरली कराने हैं? जी, CBC, LFTs, ठीक है, क्योंकि लिवर टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। वी यूज इट फॉर 2.5-3 years in our ALL patients, and you have to monitor liver function test, and you have to monitor blood counts, and it can cause pulmonary fibrosis के अलावा और जी सीवियर म्यूकोसाइटिस भी होता है। तो अगर आपके पास पेशेंट आए जिसको आपने मेथोट्रेक्सेट पे डाला है 20 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम, वो कहते हैं जी मेरा तो मुंह पका हुआ है और बुरा हाल है, immediately start thinking about methotrexate toxicity because it can cause severe gastroenteritis and mucositis. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं and sometimes they are in deep trouble. So if they come to you with the complaints of diarrhea or mucositis, so do their blood counts, do their LFTs, you can reduce the dose, temporarily stop it and then reduce the dose. PEG-glycated liposomal doxorubicin. If a patient has received more than 2 therapies and he still has a recurrent disease, हमारे पास available है, quite expensive, costs about 70,000-80,000 rupees per dose, but it's a good drug. Toxicity compared to normal doxorubicin इसकी काफी कम है। CHOP-like regimes हम देते हैं, लेकिन इतनी वो नहीं होती because most of our patients are poor, they cannot afford liposomal doxo, and we do not have that free of cost available. Normally हमारे पास होती है, तो फिर मजबूरन मेथोट्रेक्सेट और इंटरफेरॉन उसके बाद फिर CHOP-like दे देते हैं, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। Then we've got other drugs, gemcitabine, bortezomib, bendamustine, curing analogs वगैरह, ये भी available है। So this is amongst the quite a few of the medicines that are available for advanced stages. Or curative treatment, only and only curative treatment at the moment for advanced stage mycosis fungoides is allogeneic stem cell transplantation. And at 3 years, overall survival is 68%, and at 7 years, overall survival is 44%. So if nothing works, send them over to Pindi and transplant. Sézary syndrome, again, skin directed, UVB, total skin electron beam therapy, control the itching. Then first line treatment for Sézary syndrome, photopheresis is available. If not, bexarotene plus interferon, interferon plus GM-CSF. Second line method, you have got histone deacetylase inhibitors, vorinostat, romidepsin, belenostat. You have got targeted antibodies, mogamulizumab, and chemotherapy if there are bulky nodes. Third line, again, skin beam radiation, and if nothing works, non-ablative allogeneic stem cell transplantation. So to sum it up, we've got all these different treatment options available. So for early stage, 1A to 2A, topical steroids, nitrogen mustard, UVB, PUVA. Second line, if these stop working, then you have got bexarotene, you have got PUVA plus interferons, you have got interferons, you have got oral bexarotene. Advanced stage diseases, you have got PUVA plus interferon, you have got electron beam, you have got bexarotene, you have got HDAC, histone deacetylase inhibitors, you have got monoclonal antibodies, you have got liposomal doxorubicin and all these chemotherapies, and extracorporeal photopheresis if Sézary syndrome is there or in advanced cases. And you also have the option of allogeneic stem cell transplantation. So this just sums up कि किस स्टेज में क्या करना है और सेकंड लाइन में क्या करना है और इस स्टेज में क्या करना है और सेकंड लाइन में क्या करना है.
बस दो तीन हो माइकोसिस फंगोइडिस सर्जरी हो गए, देन अक्सर लोग पूछ रहे कि बस कुटेनियस जो है ना सिर्फ माइकोसिस फंगोइडिस सर्जरी है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम लोग और मांगते हो तो कहते हैं गिव यू मोर। सो नो, जैसे हमने पहले कहा, so the three that I'll discuss here, they are 30%. So 50% 50 to 60% वो हो गए, 30 हो गए, तो बस तकरीबन cutaneous T cell हमारा कवर हो जाएगा। There are two types, CD30 जिसको कहते हैं हम CD30 positive lymphomas, cutaneous lymphomas. One is lymphoid papulosis, second is primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma. So in lymphoid papulosis, these are recurrent self-healing papulonodular lesions, again epidermotropic infiltrate होते हैं, लेकिन CD30 और CD8 पॉजिटिव होते हैं। माइकोसिस फंगोइडिस में क्या होता है? CD8 नेगेटिव होता है, CD30 मोस्टली नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है उसमें भी, लेकिन मोस्टली नेगेटिव होता है, एंड CD4 CD2 ये पॉजिटिव होती हैं। इसमें CD8 पॉजिटिव है, CD30 पॉजिटिव है। Treatment is almost the same, UVA, PUVA, oral methotrexate, interferon, brentuximab, vedotin, or total electron beam therapy. And primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma, solitary usually होते हैं, can be multifocal but solitary, dense dermal infiltrate of large pleomorphic anaplastic. इसमें cells होंगे ना वो बड़े aggressive looking होंगे, वो एटिपिकल लिम्फॉइड मासूम किस्म के मैलिग्नेंट सेल्स नहीं होंगे, वो सही दहशतगर्द किस्म के सेल्स होते हैं। वो आपको मॉर्फोलॉजी में नजर आते हैं कि ये एटिपिकल लिम्फॉइड है और ये एनाप्लास्टिक है। एनाप्लास्टिक का हॉरिबल जो हमारे पास प्राइमरी उसमें आते हैं सिस्टेमिक लिम्फोमास में, they have horrible prognosis and they come in a terrible state, but once they start receiving chemotherapy they have an excellent response, but recurrence is very high. So they are extremely aggressive in general जो होते हैं, लेकिन स्किन में पता नहीं फॉर सम रीजन डर्मेटोलॉजिस्ट का इनकी मेरे में बनती है, स्किन में इतने अग्रेसिव नहीं होते जैसे हमारे पास आते हैं। सो these are CD30 positive, CD4 and CD8 positive, and CD2, CD3, CD5 negative. ALK negative जो हमारे पास आते हैं सिस्टेमिक, वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। So negative are extremely aggressive. ALK positive फिर भी गुजार, उसमें हम normally chop like regime नहीं देते हैं, उसमें हम बड़े aggressive फिर कीमोथेरेपी के ड्रग्स देते हैं। So इसमें because ये इतना aggressive नहीं है स्किन वाला primary, that's why it's very important to differentiate between systemic and cutaneous, क्योंकि treatment, prognosis, everything is different. तो पहला स्लाइड जो मैंने बताया था, how to differentiate systemic from skin, is very important. So अगर ये है skin primary cutaneous है, अगर सिस्टेमिक है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अगर कुटेनियस है तो एक्सिजन भी कर सकते हैं, अगर एक ही नोड्यूल है, रेडिएशन एंड मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी, ब्रेंटुक्सिमैब, वेडोटोटिन इन स्किन इन्वॉल्वमेंट ओनली। सो ये तो हो गए तकरीबन 30% के। फिर है एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा, इसमें HTLV वायरस जरूर होगा, ठीक है। सो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा कि HTLV पॉजिटिव होते हैं बीस पे, तो आपके पास जब रिपोर्ट आएगी उसमें होगा HTLV प्रेजेंट। तो दियर CD4, CD25, CCR4 पॉजिटिव, CCR4 और कहाँ पॉजिटिव था, माइकोसिस फंगोइडिस में था, ठीक है। कीमोकाइन रिसेप्टर 4 था। अब ये CCR4 क्यों इंपॉर्टेंट है, मोगैम्बो इसमें यूज होता है, तो मोगैम्बोलुज़ुमैब जो है वो इसमें यूज होगा। But these patients will come to you with lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, hypercalcemia, तो स्किन भी है लेकिन ये चीजें भी उसके साथ आ रही हैं, लेकिन इसमें ये चीजें होंगी, CCR4 वगैरह होगा जो इसको डिफरेंशिएट करेगा सिस्टेमिक से। And megamolizumab, the anti-CCR4 antibody is used, or allogeneic stem cell transplant, because both they are very aggressive. And the last one is cutaneous extranodal killer T cell lymphoma. This is how it will present. These are very, very aggressive. Whole skin involved होती है। ये present हुआ था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, और ट्रीटमेंट के बाद the same patient, प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, एंड ये एप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव होते हैं। इसमें जब आपके पास रिपोर्ट आएगी उसमें होगा ईबर पॉजिटिव, ये है एप्स्टीन बार वायरस के, इसमें जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो दीज आर यूजुअली एप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव, CD2, CD3 एंड ग्राइनजाइम, एक एंजाइम है ग्राइनजाइम, वो पॉजिटिव होगा, हॉरिबली एग्रेसिव,
Median survival despite treatment 1 to 2 years. CHOP इसमें काम नहीं करता. इसमें हम जो देते हैं वो etoposide, methotrexate, ifosfamide, and अभी भी मेरे पास एक patient admit है, but not skin. He is extranodal killer T-cell lymphoma systemic, and we are giving him the high dose platinum-based, ifosfamide-based chemotherapy because CHOP won't work in these. So they are extremely aggressive and they'll kill a patient within 1 to 2 years. So ये तीन जो थे, ALCL and natural killer T-cell lymphoma and lymphoid populosis, they make the rest of the 30%. So take home message: rare cutaneous disorders, but very difficult to diagnose. But once you get to the algorithms and the CD markers and TCR rearrangement, it becomes comparatively easy. Distinct entity from peripheral T-cell lymphomas. Mycosis fungoides is based on clinical and laboratory. Sirf laboratory based nahi hai, clinical laboratory points aap use karte hain. Staging and prognostic factors are available to guide a clinician. Treatment of early stage mycosis fungoides produces excellent result. Early stage में almost normal life expectancy. Late stages may not as good, but there are so many different drugs available that can be used for treatment of mycosis fungoides. So I hope कि हमने किश्ती जो है वो हमने किश्ती शोर तक पहुंचा दी है. थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो गई है कि नहीं? और थोड़ी ज्यादा हुई कहीं. कभी कभी ये भी होता है कि यार ये तो और कंफ्यूज हो गए, वो तो नहीं हुआ. तो CD2, TCR, एल्गोरिथम एंड ऑल दीस थिंग्स. सर ये इसको सर एग्जिट करें ताकि मैं सर चैनल साहब से थोड़ी. ठीक है जी. क्या लिखा था? हाँ हाँ हाँ. नहीं, दे आर डिफरेंट बायोलॉजिकली, क्योंकि इन दोनों में जो मार्कर्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन बिकॉज नाम इसका शुरू से नेजल पड़ा हुआ है तो उसको एज ए नेजल यूज कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट. बट ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम because whether they are primary cutaneous or they are the actual nasal ones, treatment usually is high dose ifosfamide, cisplatin, and etoposide. CHOP normally हम lymphomas में CHOP R-CHOP use करते हैं, इसमें वो काम. सर बाकी टी पे सर इनके साथ डिस्कस करेंगे we over to. Thank you very much, Professor Abid Jamil, for your presentation. Now I would request our worthy panelist, Major General Professor Zafar Iqbal Sheikh for his concluding remarks on the presentation. Sir, over to General Saab. Assalamu alaikum, everybody. It was a wonderful presentation by Dr. Abid Jamil. A very difficult topic, covered very nicely in a very understandable manner. Mycosis fungoides and CTCL is a difficult thing to understand. I think it couldn't be done more better than what Dr. Abid Jamil has presented. Since I understand that there are dermatology trainees also attending this webinar, so for them diagnosis, first thing as has already been, I'll just kind of like sort of summarize things for the trainees. Clinical diagnosis is very important. The classical presentation, the patch, plaque, and the nodule stage, and the erythroderma are, the classical presentations. But mycosis fungoides, classically in a pre-diagnostic phase, can mimic several dermatological disorders. Many patients will have kind of eczematous lesions, may have psoriasiform lesions, or they can mimic even simple chronic actinic dermatitis and even ectosiform presentations and several, So one piece of advice is that whenever you have a patient who has atypical presentation and is not responding to the conventional therapies, you must biopsy for to rule out mycosis fungoides or CTCL. Secondly,
it is mentioned in literature that at times you need several biopsies to reach to the conclusive diagnosis. So because the changes are very subtle in the even histologically in the early stage of the disease. So once you have diagnosed on histopathology, then comes the immunohistochemistry. And as Dr. Saab has already mentioned, that you differentiate very initially between the T and B lymphocyte by staining with CD3 and CD20. If it's CD20 positive, you go towards the B cells, and CD3 to the T cell lymphoma. But obviously, once you suggest to the histopathologist that you are suspecting CTCL or T cell lymphoma, he would prefer doing only the T cell markers. So your description along with the request is very important. Unfortunately, the T cell receptor gene arrangement test is not frequently done in Pakistan. It's not probably available. One thing very interesting was that you measure, the percentage of involvement with the hand palm, So usually, there is a variation in hand size of all, doctors. So one suggestion is that you use the hand of a patient to measure what percentage of skin is involved. And most of the treatments have already been covered, and it's only the early stage mycosis fungoides that we treat as a dermatologist. That is the stage 1A, 1B, and 2A. Till the time there is no systemic involvement. In stage 2A, there may be lymph nodes palpable, but they are not histologically involved as MF. So you have corticosteroids, you have radiotherapy, and the PUVA. There was a query about the UVB and PUVA, where you have thicker plaques, more infiltration. PUVA is considered better because it has a longer wavelength and has deeper penetration as compared to the UVB. But UVB is a preferred treatment which is available in most centers in Pakistan and has lesser toxicity as compared to the PUVA, because you give oral surveillance for PUVA and they have their own hazards. And as far as the radiotherapy is concerned, it is sometimes combined with other treatment modalities. For example, this T cell lymphoma is highly radiosensitive. So if you have a patient who's responding to whatever treatment you are giving, and there is a single nodule or a plaque which is not responding, then that particular plaque or nodule can be treated with low dose radiotherapy. So low dose radiotherapy works very well, and patients usually have good response to the treatment. I think most of the things have been very nicely covered by Dr. Saab. And one last thing I would say is that once the patient responds to the treatment should not be stopped immediately. It should be carried on. Patient should be counseled on this thing, that the need of the prolonged treatment and at least a very good prognosis in the early stages of the disease. I think the talk was very informative for all of us, and I would thank the chief organizer, Dr. Sahibzada Noor, and our guest speaker, Dr. Abid Jamil, for this wonderful session. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So we end our presentation. Thank you very much, everyone who has been listening. I'm getting very favorable remarks from all over Pakistan, and they have appreciated the presentation very well. So on behalf of all the dermatology fraternity, I thank my mentor, my friend, my teacher, Professor Abid Jamil, for a wonderful presentation.